ओम शांति भाई जी, आवाज। ओम शांति, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। Shanti, good morning, good evening. Om Shanti, good morning and good evening, everyone. Om Shanti, Sarabhai. Om Shanti, Sarabhai and family. Om Shanti, good evening, sir bhai. शांति। Om Shanti, good morning, good evening, Sarabhai, Rajesh Bhai, Om Shanti. ओम शांति। सभी देख पा रहे हैं स्लाइड्स? Yes. हम कल देख रहे थे लॉ ऑफ कर्मा, अंडरस्टैंडिंग कर्मा। काफी बातें भी, तो आज हम थोड़ी और उसकी गहराई में चलते हैं। राजयोग के अभ्यास में कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन की स्थिति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। और परमात्मा की याद का आधार भी कहीं श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और साथ में हमारे अंदर की खुशी और संबंधों में भी खुशी उसका आधार भी, और अगर दुख है उसका आधार भी कहीं ना कहीं कर्मों के ऊपर। So learning the art of performing elevated actions and leading a happy life. कर्म जैसे कि बीज है, और बीज डालते हैं कर्म क्षेत्र पर। बीज हम धरती पर बोते हैं तो उससे उसका वृक्ष निकलता है। तो कई बार कोई वृक्ष जल्दी निकलता है, कई बार तो देर से निकलता है। तो इसी रीति हम जो भी कर्म करते हैं इस ड्रामा में, इस संसार के कर्म क्षेत्र में, तो हर एक कर्म एक बीज की तरह है, और हर एक कर्म का प्रभाव पड़ता है। या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा, कई बार अगले जन्म में भी होता है। तो हम आज देखते हैं अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा, appreciate the different ways to settle karmic accounts. कल भी हम देख रहे थे karmic accounts, realize the deep aspect of creating positive accounts through positive consciousness while doing actions. तो कर्म अच्छा है या नहीं वो केवल उसके आउटकम पे डिपेंड नहीं करता, पर इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस। जैसे एग्जाम्पल, इंटेंशन हमारा क्या है। जैसे डॉक्टर है, अभी कोई मरीज है, अभी डॉक्टर उनको बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सारा एफर्ट डाल रहे हैं, पर सपोज अगर मरीज नहीं बच पाए तो पर वो कर्म फिर भी अच्छा कर्म गिना जाएगा। उसका आउटकम तो फिर भी हुआ कि नहीं बच पाए, लेकिन डॉक्टर ट्राइड his level best, his intention was to cure the patient. दूसरी ओर अगर डॉक्टर जानबूझकर एज अ बिजनेस या एज अ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ गलत दवाई दे या कुछ ऐसा करे, भले पेशेंट ना भी मरे पर फिर भी वो गलत कर्म गिना जाएगा, क्योंकि उनका इंटेंशन ऐसा। इसीलिए इस कर्म क्षेत्र पर हम आत्माएं पाठ बजा रहे हैं। तो जो गीता में भी आता है, कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो डिटैचमेंट चाहिए हमें कर्म के फल से, आउटकम जो भी हो, पर हमारा फोकस हमारे इंटेंशन पर। कई बार हम आउटकम को देखकर हमें लगता है ये तो अच्छा हुआ नहीं हुआ, ऐसे हमने बहुत एफर्ट किया पर हो सकता है रिजल्ट जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। तो कई बार हमें अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं हमने अच्छा किया कि नहीं किया। पर एज लॉन्ग एज माई इंटेंशन इज प्योर,
That is what matters eventually. कि उसी के परिणाम स्वरूप सुख या दुख की अनुभूति आत्मा को होती है। इसीलिए हमारा कॉन्शियसनेस कहे, इंटेंट कहे, that is the driving force. So we understand that the quality of one's actions makes one responsible for the future. तो हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर भी हमारे कर्मों की क्वालिटी पर आधारित है। फिर हम देखते हैं कर्म योग। हम सभी ने देखा है न्यूटन थर्ड लॉ, हम सभी ने पढ़ा है to every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. तो जो भी हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, हमें खुद अनुभव करना होता है। तो आज हम सोचते थे अलग अलग थोड़े कहानियों से हम उसको और ट्राई करेंगे समझने का और एक्सपीरियंस करने का। तो इस पर हम एक छोटी सी एक कहानी देखते हैं। सभी को पसंद आई ये छोटी सी कहानी? Very cute. So what is the lesson that we learn from this? अच्छे कर्म करने से अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, दूसरे भी खुश होते हैं। वो जो माता थे उन्होंने कौन सा अच्छा कर्म किया? उसने वो बच्चे को माफ कर दिया, like she did not return the ball. She did return the ball, but did not say anything. बच्चे ने गलती से उनके ग्लास तोड़ दिए पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, माफ कर दिया। तो अभी ये जो उन्होंने कर्म किया तो उसका फल जो छोटा सा लड़का तो उसने देखकर, और अभी छोटे बच्चे ने भी कर्म किया अच्छा, क्योंकि उसको 50 रुपए के नोट से क्या खरीदना था?
What was he dreaming? Dreaming ice cream and सौरभ भाई ये छोटा बच्चा भी देख रहा था, छोटा बच्चा भी कुछ बोलना चाहता है कि उसमें क्या सीखा। अच्छा, अरे अब नहीं इसने, अरे वाह। The lesson is give, not take. Very nice. Just to give and not take. Excellent. Thank you, Abhi. Yeah. Beautiful. Yeah. जो भी हम करते हैं तो उसका हमें रिटर्न मिलता है। तो ये जो छोटे बच्चे ने कर्म किया, तो उनका कर्म क्या था? तो छोटे बच्चे ने क्या? In one word, what can we say? What did the little child do? What was the good karma that he did? जो माता जी थे उन्होंने फॉरगिव किया, माफ किया, और छोटे बच्चे ने क्या किया? खुशी दी। माता जी को रिवॉर्ड किया। रिवॉर्ड किया। साथ में जैसे उसने रिनाउंस भी किया, त्याग भी किया, क्योंकि वो जैसे वो सोच रहा था वो ये सब, क्योंकि हैड प्लान्स कि वो इन पैसे से क्या कुछ नहीं कर सकता, और उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया और सेवा के लिए वो जैसे यूज किया, उसको उसका रिटर्न फिर खुशी भी मिली। So this is the law of karma. The law of karma says, what I give is what I get. What I give is what I get. And there are no two ways about it. जो हम दे रहे हैं वही हमें eventually वापस मिल रहा है। उसका फॉर्म अलग हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू मिल सकता है, but as long as my attention is just to give the right energy to the drama, to give this energy of the soul, जब हम आत्मा की, जैसे बच्चे ने भी उस मोमेंट में त्याग किया, यानी अपनी जो भी लौकिक या जो भी कहे, उसने आत्मा को उस टाइम देखा कि वो माफ करना ये आत्मा का गुण था जैसे, तो उसको अंदर से फीलिंग आई कि मुझे अभी त्याग करना चाहिए। This is where spirituality comes in practice. So what I receive is something that I have sent before. पहले मैंने कुछ भेजा है, उसका रिटर्न ही मुझे मिल रहा है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, तो इस अंडरस्टैंडिंग से now I realize कि what is in my hand is to send out the positive energy. And then how do I do that? Through the practice of meditation. I can, in that moment, I can then choose positive thoughts, pure thoughts, soul conscious thoughts, rather than wasteful or negative thoughts. कहते हैं life is an echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others exists in you. बहुत अच्छी बात है कि जो हम दूसरों में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। अगर हम दूसरों में अच्छाई देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छाई की वाइब्रेशन हमारे अंदर है, और अगर कोई शॉर्टकमिंग्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे अंदर से आ रही है। Remember, life is an echo. It always gets back. हमेशा ये हमारे पास वापस आते हैं। तो बचपन में जाते थे, बड़े बड़े ऐसे कुछ खाली पैलेसेस होते थे, तो एक
आवाज लगाएंगे तो फिर वो गूंज के वापस आते हैं। ऐसी लाइफ भी ऐसी है। तो भी हम एक और कहानी देखते हैं। एवरीवन रेडी? May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey, hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Did everyone enjoy that story? Yes, and actually I was relating with the act of goodness, which has a ripple effect. Avni's there, Vishal bhai? Yeah, Avni is there. Avni, Saurabh uncle is calling you now. She saw the video, so. Oh, great. Avni, you Avni, must- would you like to share your thoughts about the video? No, जब पूछो तो नहीं करना. Okay. Sorry, Saurabh bhai. No, Vishal bhai, she's It's absorbing everything. It will come out when it's time. You'll see. वो अस्मिता का वो जो बीके वाला भजन है ना, विशाल होगा विशाल तरुवर, ये बीज जो पड़ा है, ये सब वीडियो जो आप देखती है वो आप दिखाते हो, अल्टीमेटली इसका वृक्ष किस ना किस दिन बन जाएगा. It's okay, सौरभ भाई. कृति बता रही है, अवनी दूसरी अवनी अरे वो वाह, बता रही थी. अरे वाह. Yes, Kriti. So the boy helped the girl for his grandpa's birthday. Right? Yes. Okay. And he was a kind person, right? Yeah. Say Om Shanti Sodabhai. अरे Om Shanti, Kriti bhai. Nice to hear from you. Thank you. Thank you for the story. वो प्ले कर रही थी, उस स्टोरी सुनी ना तो भाग के आके सुनने लग गई और फिर और उसको लगा कि आप उससे ही बात कर रहे हैं, उसको नहीं पता था कि म्यूट है. मुझे आपको तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ तो बता देगी. सीख जाएंगे बच्चे थोड़ा साथ में. थैंक यू. How that कि जो उस इंसान को तो पता नहीं था, पर अल्टीमेटली उसी के पास वो how it came back. ऐसे जो, and again the intent was the key here. जिस intention के साथ उन्होंने छोटे बच्चे की मदद की at the right time and without any kind of hidden agenda or without any motive that way, very selfless heart, और फिर उनको वापस भी वो मिला. So this is the law of karma. It always comes back. They say how people treat you is their karma and how you react is yours. So we're all ultimately, क्योंकि हम सभी actors हैं, हम सभी अपने अपने कर्मों के लिए खुद responsible हैं. तो जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्मा है, जो दूसरे कर रहे हैं वो उनका कर्मा है. So this realization, इससे फिर हमें किसी को कोई गलत करते देखते भी हमारे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं, पर एक रहम की ही भावना जागृत होती है. कोई नहीं, अगर कुछ गलत उनसे हो भी रहा है, परवश आत्मा है, तो भी उनके लिए अंदर से रहम भाव.
तो spiritual application कहते हैं of the law of karma. So what exchanges old for new, offers no special deals or closeouts, and keeps us coming back for more. हम कहते हैं reincarnation. Reincarnation. कैसे? जैसे हम आत्मा, हम ही दूसरा एक शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर लेती है. जो हमने कर्म किए उस आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है. और मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर में ही जन्म लेती है. क्योंकि जो भी हमारे कार्मिक हिसाब किताब है, जिन संबंधियों के साथ है या किन्हीं पदार्थों के साथ है, तो वो ह्यूमन बॉडी में ही फुलफिल होता है. इस रियलाइजेशन से feel you were, you will be, know this while you are. Reincarnation is the natural process of recycling human energy through birth, growth, decay, and death. Birth, growth, decay, and death. Each rebirth is a link in one's eternal chain of latent impressions. Thoughts, desires, and actions. The soul in its new body is given the opportunity to learn from the past, to live in the present, and to prepare for the future. तो ये present जो भी हमें मिला है, ये भी हमें एक opportunity है अपने कर्मों को श्रेष्ठ रूप से लगाएं. Choose a response based on pure and positive energy of the soul, rather than the insecurity of the. पुनर्जन्म के तो बहुत सारे ऐसे हम जानते हैं, बहुत सारी कहानियां भी हैं, रियल लाइफ इंस्टेंसेस भी हैं पुनर्जन्म के. और जितना जितना हम इसको समझते हैं, तो हम अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ, तो बस एक शरीर ही है जो दिख रहा है, पर मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूँ, पर कुछ समय ही पहले मैं दूसरे शरीर में थी, और कुछ समय बाद मैं फिर दूसरे शरीर में जाऊँ. तो ये जो रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म, ये भी आधारित है लॉ ऑफ कर्मा. जितने हम कर्म इस जन्म में अच्छे करते हैं, उस आधार से हमें नया जन्म मिलता है. इसके ऊपर ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं पुनर्जन्म के ऊपर, पर कुछ कहानियां अगर हम देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि सही में पुनर्जन्म से हम आत्माओं का कितना कनेक्शन है. तो हम एक ऐसी छोटी सी स्टोरी देखते हैं. So this is a real life story about little child who remembered his past life. When James Lineker was just 2 years old, his behavior already seemed strange and frightening to his parents. It took them several years to find the reason for the boy's behavior. And when the reason was found, they couldn't believe it. The only plausible explanation was that the boy is the reincarnation of a fighter pilot who died at the end of World War II. After watching the video, tell us your opinions in the comments. Enjoy. Plane on fire.
These are the screams that came from little James's room and woke up Andrea and Bruce Leiniger almost every night. The parents seriously regretted their visit to the World War II museum with their 2-year-old, although they could not understand why the visit had such a strong influence on him. There was a huge hall full of fighter planes, but there were no scenes of violence, no pictures of disaster. Since the visit, the boy developed a serious interest in airplanes. At night, he began to struggle with nightmares more and more often. It was as if he was desperately trying to get out of some kind of an invisible shell that was squeezing him from all sides. He screamed heart-rendingly, "Airplane crash, plane on fire, little man can't get out." The Leinigers' family doctor was puzzled. Nightmares and night terrors are common for children, but usually this phase occurs at about 4 years old. James's nightmares began much earlier and recurred with frightening consistency. The doctor advised the parents not to panic. In case of a night terror, he advised them to take the boy into their arms, to speak with him quietly and gently in order to try and calm him down, as well as to ask him to give detailed descriptions or even draw pictures of his disturbing dreams. Even though James experienced more and more nightmares at night, during the day he gave the impression of being a generally happy and healthy child. This phase, however, lasted only for a limited time. Soon, the strange behaviors also started to occur during the day. One time, Andrea showed her son a model airplane in the window of a toy store and said that there was a bomb under the pilot's cabin. James responded confidently, "That's not a bomb, that's a drop tank." When he went on a trip with his parents, the boy amazed Bruce and Andrea by how professionally and confidently he observed the planes standing on the airfield. Bruce said proudly, "He's a genius." But Andrea was getting more and more worried. One night, James had a particularly bad attack. It took a long time for the boy to calm down in his mother's arms. Following the doctor's advice, Andrea asked him, "Who is the man that can't get out?" James replied, "Me. What happened to your plane?" "It caught fire and fell." "Why did it fall?" "It was hit." "How?" "Who hit you?" asked Bruce. The boy looked at him with a puzzled look and said in a matter-of-fact way, "The Japanese, of course." Afterwards, he gave a detailed description of Japanese fighter planes during World War II. The boy signed his pictures with James III. Later, in a list of pilots who died on March 3, 1945, Bruce discovered the name James Houston Jr., James II. James's maternal grandmother was the first to have the courage to voice her opinion. Maybe the Leiniger family is facing a case of reincarnation. The parents were categorically opposed to this line of thought, and it even made Bruce seriously angry. As a Christian and a rational thinker who worked as a director of human resources at an oil company, he did not want to hear about what he considered to be stupid superstitions. He said that tales of a previous life offended rational thought. He did not give up on finding a rational explanation for his son's behavior. In order to achieve this, he began to ask the boy more detailed questions. "Do you remember the type of plane that the little man flew?" "Corsair," answered James without hesitation. "Where did it take off from?" "A ship called the Natoma." Bruce began researching the internet and soon found out that an American aircraft carrier called the Natoma Bay was used to transport Corsair planes during the war. Intrigued by the coincidence of those two details, Bruce continued to have conversations with his son. Under the guise of a historian writing a book, Bruce Leiniger went to a meeting of the Natoma Bay veterans. It turned out that absolutely all details that he heard from his son were true. These included the names of technical flight elements, nicknames of combat aircrafts, and the location of their last battle in 1945, which the boy recognized in a picture. At that point, Andrea too was convinced that the soul of the slain fighter pilot chose their son to return to this world. Bruce, however, continued to fight against superstition. He was set on catching his son in a mistake in order to prove that the whole story of a fighter pilot was the product of the boy's imagination and coincidences that were amazing and unbelievable, but coincidences nevertheless. Do you know if the man from the plane had any friends? Yes, he had a friend named Jack Larson. The father was convinced that the mystery would be resolved when it would become clear that there was no Jack Larson, but that was not the case.
Not only did Jack Larson exist and was a fighter pilot during World War II, but he was still alive. Bruce spared no time or money in locating the veteran. He went to him with a list of descriptions that his son gave to him about his service in the U.S. Air Force. Larson confirmed each and every detail. At that point, Bruce was ready to believe in any explanation. He studied his son's drawings for hours. In one picture, the boy clumsily drew a burning plane, which no longer surprised Bruce. However, what surprised him was the boy's signature, which read, "To Dad from James III." Why the third? There was no James Sr. or James Jr. in the Leiniger family. James Huston was a fighter pilot whose plane was hit in 1945. When Andrea took over the initiative, she turned to a psychotherapist named Carol Bowman, who was the author of a best-selling book on the manifestation of reincarnations in the behavior of children. Bowman investigated dozens of children who were suffering from painful memories of past lives. She told Bruce and Andrea that their son was not unique and that such vivid manifestations of reincarnation usually occur in instances of violent deaths. Her take on the situation was that the soul was so saturated with past trauma that it couldn't rid itself of it even as it entered into the other world. This explanation no longer seemed strange to Bruce and Andrea. The psychotherapist advised for the parents to speak to the pilot directly when they were comforting their son because the pilot still lived within the boy. They should ask James to recall his nightmares as if they were actual memories, not dreams. The boy's night terrors really did become less severe. The boy woke up screaming and crying less frequently, while Bruce continued to study the history of the Natoma Bay and the list of slain pilots. One day, the final piece of the incredible puzzle was found. On a list of pilots who were hit on March 3, 1945, was the name of James Huston Jr. In parentheses, it said, James II. If all of this was true, it made sense that little James thought of himself as James III. In 2004, when James Leiniger was 6 years old, his story was featured on the front pages of major newspapers and gathered a huge audience on primetime on ABC. One of the most fascinating scenes was the Leinigers' family visit to Anne Barron, the sister of the late James Huston Jr. With difficulty to find the right words and tears in her eyes, she confirmed that the boy told her a lot of things that were known only to her and her brother, who passed away a long time ago. Anne Barron questioned how it is possible not to believe in other worlds and reincarnation after a story like this. Members of the Skeptic Society, which actively fights against mysticism and the occult, took it upon themselves to refute the story of James Leiniger. They said that Bruce and Andrea more or less consciously created a family saga in order to rid themselves of feelings of guilt associated with their son's nightmares that were brought on by their visit to the military museum, and also to attract attention to themselves. It is worth saying, however, that their rational arguments did not sound too convincing this time around. Carol Bowman, on the other hand, explained that memories from past lives are like regular memories. Events, places, and objects can force images or sensations from the past to re-emerge. This is what happened at the museum. Contact with familiar objects is even a part of a Buddhist ceremony, the purpose of which is to recognize reincarnated lamas. The claims of the family saga built on coincidences would have been more convincing if they were talking about a few words said by a child accidentally. But in James's case, we're talking about over 100 pieces of evidence, the truth of which was confirmed by careful verification. Today, James is a 17-year-old who leads the life of a typical young man. He is no longer troubled by nightmares. Memories from his past life stopped appearing to him ever since he and his parents went to say goodbye to the deceased pilot. He said a prayer and dropped a bouquet of flowers in the ocean off the coast of Japan, where 75 years ago on March 3, 1945, the plane of James Huston Jr. caught fire and crashed. It's a very real story, जो कि काफी न्यूज में भी आई, पर इसको देख के ही अंदर से फीलिंग आती है कि कैसे हम सभी आत्माएं हम इस एक जन्म के ही बारे में सोचते हैं, पर हम रियली पिछले अनेक जन्मों से जैसे हम अपने कर्मों के खाते को कैरी करते हुए आ रहे हैं। जो कर्मों का ही जो खाता है
वो इस एक जन्म का ही नहीं तो कितने कितने अनेक जन्म का है। तो ये रियलाइजेशन, इससे फिर हमें बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। साथ में ये भी समझ आती है कि ये जो हमें जन्म मिला है, ये जो हमें चॉइस दी गई है, उसको हम किस रीति से यूज करें। तो हम कहते हैं कार्मिक लॉ के प्रेमिसेस क्या है। जैसे ही हमें समझ आता है कि लॉ ऑफ कर्मा काम करता है तो फ्रीडम, बिकॉज अंदर से रियलाइजेशन आती है कि मैं ही अपने हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, नो वन एल्स, एंड बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल सो आई कैन चेंज एवरीथिंग। फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम आती है। चॉइस, आई हैव द चॉइस, राइट, मैं क्या चूज कर रहा हूँ ये भी मेरे हाथ में है, बिकॉज आई चूज द वे आई वांट टू react to a particular situation. Choice भी है कि not to be attached to the outcome, but to live in the moment and to see everything is okay. तो spirituality से हमें ये understanding आती है, जैसे कि कोई मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो अगर हम उस कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं कि इंडिया को जीतना चाहिए, अगर वो इंडिया हार जाएगा तो हमें दुख होगा, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, पाकिस्तान हार जाएगा तो दुख होगा। पर अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये तो गेम है, मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय कर रहा हूँ, देन नो मैटर आउटकम जो भी हो, बट आई विल बी हैप्पी बिकॉज आई एम एंजॉयिंग द गेम। एंड दैट्स हाउ दिस एटीट्यूड जो हम सोल कॉन्शियसनेस में समझते हैं कि आई द सोल, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द एक्टर, द ऑब्जर्वर, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग everything. So I choose to be an observer. That is my choice. Not to get entangled in the results of something. Total responsibility. सारी responsibility मेरे ऊपर, मेरी feelings की responsibility, तो I can blame anyone. कई बार हम भगवान को भी ब्लेम करते, पर नहीं, अभी कोविड की सिचुएशन आई तो मैं कई बार who is to blame? No one is to blame. हम सभी आत्माओं ने कलेक्टिव कर्मा से ये सिचुएशन हमारे सामने आई है सेटलमेंट के लिए, तो नो वन इज टू ब्लेम। कार्मिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग से ये हमें, अगर कोई हमारे साथ कोई बिहेवियर ठीक नहीं है किसी का, तो कई बार हम योग में बैठते हैं तो वो सब संकल्प आते हैं बार बार, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, जो भी है वो कर रहे हैं, वो उनका कर्म है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्म, एंड आई जस्ट हैव टू थिंक अबाउट मायसेल्फ। तो देन इट्स लाइक अ मोटिव, मेरा मोटिव क्या है, कोई भी इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या है। इसलिए हम बात करते हैं डॉक्टर्स का भी इंटेंशन मैटर्स। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम बच्चों को भी, जैसे हम बच्चे भी हैं तो बड़े भी हो रहे हैं, तो पर हमारा इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है किसी भी चीज को करने का, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर मोटिव राइट है तो देन इट इज द राइट कर्म। अगर मोटिव, इसीलिए कई बार नहीं, बाबा भी कहते हैं कि चाहे सेवा भी है पर वो तो बाबा का काम है, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, निस्वार्थ है या उस सेवा से हमें अपने लिए कुछ चाहिए या कोई स्वार्थ भाव मिला। तो जब निस्वार्थ होता है तो फिर हर चीज जैसे अपने आप, तो मोटिव हमारा ऐसा सेल्फलेस, निस्वार्थ।
कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हर एक कर्म के होते हैं, चाहे छोटा कर्म हो, चाहे अभी हो, चाहे बाद में हो, और हर एक बीज का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, इस जन्म में या कई बार अगले जन्म में। एंड इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अगर हम इग्नोरेंट है, अगर हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ काम नहीं करेगा, काम तो फिर भी करेगा। अगर हम स्पीड कर रहे हैं रोड पर और फिर पुलिस ने हमें पकड़ा और पुलिस हमारे पास आए और बोले आप क्यों स्पीड कर रहे थे, बोले हमें तो पता ही नहीं था स्पीड लिमिट इतनी है, पर जो भी हो टिकट तो हमें मिलेगी, बोले हमें पता नहीं था। तो इसीलिए ignorance is not an excuse. So ये जो कर्म का सिद्धांत है, इससे just feel that inner, that liberation. अच्छा, तो हम बस 1 मिनट अपने स्वधर्म में फिर से एकाग्र हो जाए। हम आत्माएं हैं, एक्टर्स हैं, ये खेल चल रहा है, we are detached, और इस खेल के आउटकम में, कोई भी सीन के आउटकम में हम अटैच्ड नहीं है, उस सीन को एंजॉय करने के लिए एक खेल की दृष्टि से ही देखते हैं। और परमात्मा शिव बाबा को और उनके साथ को हम अपने हर कर्म में नेचुरली फील करते हैं। और कोई भी कर्म स्वार्थ भाव से नहीं, पर निस्वार्थ भाव से हम शांति। थैंक यू। फिर हम कल आगे थोड़ा करेंगे। Anyone would like to share, add their thoughts, experiences? Om Shanti. Thank you, Sarabhai. So आज हमने ये रीइंकार्नेशन के हमने एक शरीर छोड़ दूसरी शरीर ली है, लाइक रीइंकार्नेशन हो रही है। जब हमें इस जन्म में, जब हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इस जन्म में जब हम कर्म के सिद्धांत को जानते हैं और हमें फील होता है कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि ये आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ और पिछले पास्ट की जन्म की सब कर्म अकाउंट को अब क्लियर करने की मौका मिली है।
और जब क्लियर करेंगे तो हमारे फ्यूचर भाग्य बनाने की भी हमारे हाथ में है। So ये तो पूरा आज़ादी है, like freedom and it's a liberation actually. I am telling this मेरी अनुभव से बोल रही हूँ। जब मैंने एक कार्मिक अकाउंट क्लियर की तब भी कंप्लीट लाइक फ्रीडम, आज़ादी की अनुभव हुई थी। सब मेरे ही हाथ में है और मेरे चॉइस है मेरे कर्म कैसे करें like do I do according to the others behavior or do I do as per my as per my bhagya, like ये मेरे कर्म मेरे भाग्य बनाता है, औरों के कर्म उसकी भाग्य बनाता है। ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो और के कर्म देखकर मैं अपने कर्म को चेंज नहीं करूंगी। मुझे ऐसे कर्म करना है जिससे मैं अपने भाग्य बना सकती हूँ। और आपने जो कहा कि इंटेंशन, निस्वार्थ भाव, हर एक कर्म में निस्वार्थ भाव वेरी इम्पोर्टेंट। जब निस्वार्थ भाव से करे तो आउटकम जो भी होगी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भाव इम्पोर्टेंट है। निस्वार्थ भाव से हमें कोई उस वीडियो में भी था कि उसकी जो केक बाय किया था उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, उसने नाम भी नहीं दिया, एड्रेस भी नहीं दिया, सो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। उस वीडियो से मुझे और एक बात रहा कि जो कर्म हम करेंगे उसे देखकर और भी करेंगे, ये भी याद आ गई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सर भाई। आप जब कोई भी कहानी या कुछ भी गाते हैं, हम तो जनरली जैसे उसका रिएक्शन भी अच्छे कर्मों से अच्छा लगता है, बट यू ऑलवेज ब्रिंग आउट द डीपर मीनिंग ऑफ इट कि भाई त्याग नहीं लगता, उसमें खुशी मिलती है जब हम करते हैं किसी के लिए अच्छा। बिकॉज कुछ भी करने के लिए थोड़ा तो करना ही पड़ता है त्याग, यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे लिटिल बिट, पर वो लगता नहीं है क्योंकि उसमें जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है। और दूसरा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो जब मैंने शुरू में शिवानी बहन को सुनती थी, दैट्स हाउ इट ऑलवेज, मतलब मेरा कि जो भी हम करते हैं वो वापस हमें आता ही है, नो मैटर व्हेन और व्हाट। जैसे कल भी हमने कुछ देखा था और आज फिर जो बूमरिंग का यही है, और फिर वो जो केक का है, इट वाज सेम थिंग कि उस ओल्ड मैन ने उसको लेके दिया और इट केम बैक टू हिम। सो और जब भी कुछ लॉ ऑफ कर्मा में हमारी इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी काम करते हैं किस इंटेंशन से करते हैं, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा भी आया है, पर अगर हमारा इंटेंशन अच्छी नहीं है तो वो विकर्म ही है, वो कर्म नहीं है। और अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया है, अच्छे मतलब इंटेंशन से किया है, और वो उसका रिजल्ट गलत निकला है, बट इट्स स्टिल क्योंकि वो उसके भाग्य में था, उसका था, उसको मिलना था। और बहुत अच्छी लगी एवरी स्टोरी, आई मीन वेरी इमोशनल टू, बहुत अच्छा लगा हर स्टोरी से। रिजल्ट निकले हैं कर्म के, लॉ ऑफ कर्मा और डीपर हो रहे हैं। थैंक यू सर भाई। ओम शांति। सर भाई मैं कुछ कहना चाहूँगा। हमारी मम्मी थी, वो हमें कहती थी पंजाबी में, नेकी कार खूच पा। व्हाट दैट मीन्स इज जो भी किया उसको बहते पानी में फेंक दो, क्योंकि जब बह रहा है पानी तो वापस याद नहीं करोगे उस चीज को। दैट इज द भाव पार्ट, राइट? सो यू डू समथिंग, यू गिव नॉट विद इंटेंशन, नोबडी फोर्स यू टू गिव। आपने अपने इंटेंशन से दिया, बट फिर उसको सोचने का जरूरत नहीं, लाइक thinking about that bhav, because nobody is forcing you to do something for them. किसी ने आपके किसी तरह से भी कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप अपने आप से करते हो। एंड सर भाई आपका ट्रैफिक कंट्रोल चलने वाला है। शांति जग में दान है,
शांति की शक्ति से शांति जग में नानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसे दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में नानी है। शांति की शक्ति से Yeah, just the final thought, सौरभ भाई ये कह रहा था कि जब हम किसी का भी कुछ भी करते हैं and like nobody is forcing us to, हमें कोई फोर्स नहीं करता कि आप उनका कुछ करो या ना करो। मेरे हिसाब से कुछ कर रहे हो तो भूल जाओ, अच्छे भाव से करो, कुछ नहीं तो नहीं करो, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि जो करके बुरे भाव से किया वो ज्यादा हानिकारक है कंपेयर टू कुछ ना करना। That's what I feel, because तुमने रजिस्टर कर दिया अपना बैंक अकाउंट में, वो होती है ना पासबुक में एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो जाती है। तो इसलिए मत ही करो अगर नहीं अच्छे भाव से नहीं कर पाओ। ओम शांति सर। Any other inspirations? अच्छा, तो फिर हम कल जी। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है सब सुन के, मतलब अपने अंदर में उसको जब क्या होता है ना, बार बार सुनते सुनते असर तो पड़ेगा ही। जैसे एक पत्थर के ऊपर भी अगर पानी के गिरता रहे लगातार, उसमें गड्ढा हो जाता है। तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। थैंक यू। Thank you for all your time and listening presence. Yeah. अच्छा, तो हम कल थोड़ा और आगे इसको कवर करेंगे कर्म के ऊपर। स्टोरी से तो सौरभ भाई और भी पक्का हो जाता है दिमाग में। ओहो, थैंक यू सो मच। ये सेवा भाव वाला तो वो रिटर्न में आता ही है, चाहे कहीं से भी आए, थोड़ा सा भी करो आप तो रिटर्न आता ही है। मैंने तो खूब मतलब अपने उसमें ही ये देखा है कि हाँ पक्का रिटर्न में आता ही है, जो भी अच्छा करो ना सेवा भाव का। तो थैंक यू सो मच सौरभ भाई, इतने अच्छे से आप देखो। सभी इसलिए चुप है क्योंकि वो सब हम सब वो हो गया, जैसे वो स्टोरी एक अंदर बनती जा रही है। सब इतने अच्छे से सुनते हैं ना, आपकी आवाज में एकदम शांत हो जाते हैं सब आपको सुन के। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, थैंक यू। थैंक यू फैमिली। ओम शांति एवरीवन। शांति सौरभ भाई। शांति। इस कर्म के सिद्धांत से यही सीखने मिलता है कि चाहे जानते अनजानते कर्म करते हैं तो वो रिटर्न तो आता ही है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता इसमें। इसीलिए अभी जो करना है वो निष्काम भाव निस्वार्थ भाव से करना है। थैंक यू सौरभ भाई। थैंक यू। ओम शांति। So everyone have a good day in India and good night here. Om Shanti Saurabh bhai.
Shanti. Shanti. Yeah, Om Shanti, Daddy. Auntie. My dad and mom has like 1 month of tapasya at home. They did like 1 month of retreat, whole day retreat. मम्मी एंड डैडी ने किया था एक जनवरी मंथ में. ओम शांति. थैंक यू सौरभ भाई. शांति सरोवर. कुसुम भाई बहन लगता है आपने इनको भी लास्ट ऑफ फर्स्ट बनाना है. पूरा महीना बट्टी करवा दी. हाँ, वेरी नाइस. किरण बहन, मेरी डैडी मम्मी आपको जानते हैं, देखे तो नहीं पर जानते हैं. डैडी आप जानते हैं राइट किरण बहन को? डैडी अब मैं भी जान गई हूँ. आप इनके बारे में इतना बोलते हो ना. आई थिंक वो चले गए. हेलो. चले गए. ओह नहीं अच्छा है. हाँ जी. बुद्ध ओम नाम शांति है. बुद्ध भाई जी. ओम शांति. शांति. आप डैडी आप किरण बहन को जानते हैं राइट? कितनी बार मैंने बात की थी. हम किरण बहन के घर में रहते थे जब वहां जाते थे. यस यस. हाँ. कुसुम बहन आपके बारे में बताती रहती हैं बुद्ध जी. यस यस. बहुत अच्छा लगा. आप पूरा महीना भट्टी करते रहे तो दैट इज अमेजिंग. पूरा महीना 6 AM से 6 PM तक 12 घंटे एक महीने जूम से ही किए थे. पूरा अच्छा. तपस्या बहुत अच्छा करे डैडी मम्मी बहुत. वेरी नाइस. अपनी तरह बना रहे हो ना इनको? नहीं, वो तो बुद्ध ही है, लाइक बुद्ध भगवान जैसे. से आगे बढ़ नानी रहे हैं. बुद्ध. हाँ, बहुत अच्छे कर रहे हैं. Thank you for sharing that. Yeah, excellent. And it's nice to hear your voice, Kiran Ben, in this class. Yes, I heard in the morning recording and I was about to text you. I wrote half of it. Okay. क्योंकि मुझे नींद आ गई रात. कल ना वो कीमो के बाद sometimes I can't sleep, तो सारी रात नींद नहीं आई है. जब वो conversation शुरू हुई तो मुझे नींद आ गई. Okay. Sorry about that. Oh, no problem. Kiran Ben, Om Shanti. Om Shanti. और कुसुम बहन, ये तो एक हम लोगों के लिए एक लेसन इंस्पिरेशन है कि मतलब पूरे एक महीना सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक भट्टी किए घर में रह के. मतलब कितना उनका डिटर्मिनेशन था और कितनी लगन थी बाबा से. तो एक बार होगा तो कभी उनका अनुभव सुनवाइएगा मम्मी पापा का. हाँ. औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा उससे. हाँ, sure. Thank you. थैंक यू. Shanti, thank you. Good night and good day, everyone. Good night and good day. Om Shanti. Om Shanti.